आप तो बस्तर के डायनेस्टी के महाराज हैं, बट और True. मैं आपसे काफी प्रश्न पूछने वाला हूँ। ये मैं इस तैयारी से आया हूँ। सो True, true. I am ready हाँ जी। to सो answer all your questions. सो Two medicines I can say. With that is also blessing of Gurudev. One is Shakti drop and second is that Kabasur बस tablets. इतिहास कहता है मतलब हमने उसका स्टोन इंस्क्रिप्शंस निकाले हैं, अच्छा। वो चोला डायनेस्टी तक जाता है। Oh my तो God. उसमें से ये बताया गया कि उसमें से एक भाई ने आ करके चालुक्य डायनेस्टी चालू कराई गई। सबसे पहली डायनेस्टी हमारी चालुक्य वंशज कहा गया बस्तर रियासत। नमस्कार, गुड इवनिंग। सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब का बटन दबाइए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचता जाए और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज का एपिसोड सच में बहुत विशेष है। आज हम मिलने जा रहे हैं एक बहुत ही खास व्यक्तित्व को, और वो है बस्तर रॉयल फैमिली के हाइनेस कमल चंद्र भंजदेव जी। कमल चंद्र भंजदेव जी जो है, ही कम्स फ्रॉम द फेमस, ही इज अ डिसेंडेंट ऑफ द फेमस रॉयल फैमिली ऑफ बस्तर। उनके पास है वो एक इतिहास का एक बहुत बड़ा खजाना है, और कौन से खजाने हैं वो तो वही बता पाएंगे, पर उसके लिए आपको ये वीडियो आखिरी तक देखना पड़ेगा, तभी आप जान पाएंगे कि कौन कौन से खजानों की आज वो बात करने वाले हैं। तो आइए मिलते हैं बस्तर के वर्तमान महाराज कमल चंद्र भंजदेव जी से। Hey Gurudev, how are जय you? गुरुदेव, जय गुरुदेव। A very warm welcome to His Highness Kamal Chandra Bhajdev Ji Maharaj, and it's a great honor to have you on our show. और ये ऐसा सौभाग्य है कि आपका तो खैर आप तो बस्तर के डायनेस्टी के महाराज हैं, बट मैं भी अपने आप को बस्तर का एक अटूट हिस्सा मानता हूँ। I really, I feel that I have some connection with Bastar, which it's very difficult for me to explain. So इसलिए today's interview is really very important, and I've been really looking forward to this. So Thank you. please welcome to our show. Thank you. तो मैंने I have really actually my team, my backup team who does all the editing, जो सब करते हैं, वो हर बार मेरे को बोलते हैं कि ना आप क्वेश्चंस रेडी करके रखा करिए, यू शुड प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू, ये वो, बट आई नेवर डू दैट, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव एक्चुअली नोटेड डाउन क्वेश्चंस। सो Okay. there's a lot to ask you, और True. मैं आपसे काफी प्रश्न पूछने वाला हूँ। ये मैं इस तैयारी से आया हूँ। सो True, true. I am ready हाँ जी। to answer all your questions. सो नाइस ऑफ यू टू हैव गिवन अस दिस टाइम। तो पहला तो मैं बहुत एक अच्छी खुशी की बात है कि एक तरीके से तो हम लोग गुरु भाई हुए। आप भी आर्ट ऑफ जी जी कोर्स किए हैं, एंड जी जी आप सौभाग्य पूर्वक आप पूज्य गुरुदेव के दर्शन भी पाए हैं, और आज भी किसी न किसी सेवा में गुरुदेव के सानिध्य में कुछ तो कुछ कार्यों में जुड़े रहते हैं। जी हाँ, जी। जहाँ तक मेरा नॉलेज है। और सुदर्शन क्रिया तो अब प्रैक्टिस करते होंगे जब भी, अभी आई डू I नॉट। think I think every day I'm doing it. ओ Every रियली? day. I have not left from. It's been quite long, ओ quite long. ओ अमेजिंग। आई And थिंक you can pat your back for that. I mean, that's I really should. really appreciable, you know. And it's been quite. I think before lockdown we started. You must be knowing Ajay Singh ji हाँ, from. जैसे He's also a teacher. श्योर So I श्योर just left in between because of a lot of political, श्योर। responsibilities. हाँ जी, हाँ जी। Like I was traveling all over. ठीक है जी, So, ठीक but now we have started. It's been like quite some time, and I think it's blessing of Gurudev that I've been doing it every day without fail. है। And I think that is the only thing which has I will say that I'm away from Corona, यस। whereas all the people surrounding, even lot of family members were अच्छा। affected. But I think I'm having Kabasur also every day, so I have made it sure that I क्या should have बात that. क्या And बात है। and Shakti drop without अच्छा। fail. अरे Yeah, वाह। without fail. From this 7 months, I think I was the only person without fail I'm doing that, and it has helped quite a lot.
हाँ जी, हाँ जी. and it has made us patience. And after doing continuously from 6 months, हाँ, I felt that your mind is calm and you're focused on a lot sure. of affairs which a person like me, because as I've got so many things in my basket to take हाँ care जी, of, so it gives a lot of concentration. And definitely on the health side, हाँ जी. I would share that lost 10 kilos, Oh, right? really? Yes. And it was like Sudarshan Kriya and walking, हाँ, हाँ, हाँ. that has only helped. And I Oh, was amazed, without any gymnasium, no gym and anything, but right. only these things and very much controlled food. and Oh, and only these two, like I'll say, I'm just having two medicines, I can say, हाँ. but that is also blessing of Gurudev. One is Shakti drop and second is that Kabasur बस tablets. बहुत वो पर्याप्त है. एंड थर्ड ऑफ कोर्स आप सुदर्शन क्रिया कर रहे हैं और गुरुदेव के आशीर्वाद तो है ही आपके साथ. जी So जी, so very always. nice. So I will also go a little bit on your education. I read, I think, on the social media कि आप you have studied outside India, part of your education. And Yes, after my schooling was done in Rajkumar College, Raipur. okay. And then from there, that is known as IPS schools, because that was like created by our great grandfathers. It's Oh, like Mayo College in Ajmer, correct, Rajkumar correct, College in Raipur, correct, Rajkumar correct. College in Rajkot, That's right. then Vellum College. Then you That's must have heard about Sindhya's, Delhi correct. College Indore. So we are on the same platform. Right. So I studied here in Raipur, Rajkumar College. Then I went to Bangalore for my undergraduation. I did BCom honors Okay. from Bangalore. Yeah, I was there in Bangalore, and it's a coincidence. Coincidence. And I was there. I did from St. Joseph's College of Commerce, Brigade Road. Oh, I yes. did. I did my BCom honors. That time, the honors were started in there. Right, right. Now it has become autonomous. Earlier, it was under the Bangalore University. Correct, 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 correct. And then from there, I went to London. First, Okay. I went to Coventry University, Okay. which was a site from Birmingham, Right, just neighboring Birmingham, right. and Warwick is just close by. Then I did Master of Science in International Business. That Okay. yeah. And then from there I went to LSE. It was Okay. a summer course. Then I went and did Master of Political Science and Economics. From London's School of School of Economics Economics. and Political Science, yes, LSE. Excellent. And then from there I went to computer education, just to learn about the computer education. So there was a diploma Okay. in computer sciences, they call it as, but in India it's equivalent to a master. Right. So I did this three, and I worked as well there. It was very amazing that I worked as a till manager. So Okay. cash collect karte hain. So I started with that, and it was quite a good learning experience, because the family which I belong to, Sure. I never needed that, but I Absolutely. wanted to make myself that I should earn my own bread and butter. That Why was not? my So so I nice. worked So nice to hear this. around 1.5 years, approximately 2 years. I worked because I should cancellation of this Dashera period, because I have to come back to Bastar. So I always used to skip 4 or 5 months Sure. because of this Dashera function goes for 75 days, as you know. So I Oh, had to skip that many days from London and come here and do my rituals and sure. functions. Right. So this was my life. And then after education, still I'm pursuing. Right now, I've started taken up PhD in Bastar history. So that is a distance I must learning. And go down to you. I must go down to you. Really. You know, so I have myself been an enthusiast of history. I'm a political science honors graduate, and I true. always wanted to do a PhD. But then I ended up doing an MBA, went to corporate, and came into art of living. So I really bow down to your real this thing desire for education and to live a normal life, as I would call it. Yeah, please go ahead. True. So this was my journey for as a student. Yeah, And coming back, always there are a lot of political changes which came to my life. People sure, wanted me to join a political party, right. and they wanted this royal family to come up. As you know, my grandfather, he Yeah, was there, a very powerful leader. sure. And so this is how everything started. Sure. In fact, I have many questions which I had planned out. Some of them you have already answered, but I True, will go in more in detail. true. Since you are also doing a PhD in Bastar history, there's not a better choice to ask you the kind of questions that I listed out. Yeah. Sure, sure. So this will be a mix of Hindi and English. हम सिर्फ
इंग्लिश में नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं तो वंचित रह जाते हैं, है ना? कोई बात नहीं, हिंदी हाँ, इंग्लिश या वी विल कीप इट मिक्स, ठीक है ना? यस यस। तो अभी मैं आपसे सबसे पहले ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि मैं दंतकारनी मंदिर गया और वहां पे हमने जो कहानी सुनी कि वारंगल से जो बस्तर स्टेट की स्थापना हुई थी, वहां से पहले राजा आए थे और देवी के साथ आए थे, तो देवी लाई थी कि आशीर्वाद था। तो थोड़ा सा उस वो प्रकरण के ऊपर आप बताएंगे तो इट जी, इज समथिंग आई थिंक एवरीबॉडी नीड्स टू नो दिस। अ, बस्तर रियासत की जो स्थापना हुई, हाँ व्हेन जी, वी फॉर्म दिस किंगडम, लाइक वी से दैट कि भारत का संविधान कब बना, 1950 में बना, करेक्ट, तो हम डेमोक्रेसी बने। करेक्ट, उसी तरीके से बस्तर रियासत का एक शिलालेख होती है जिसमें ये कहा जाता है कि किंगडम यहाँ से रूल होगा। श्योर, जैसे दिल्ली सल्तनत कहलाई जाती थी, दिल्ली जहाँ चालू होती थी, दिल्ली से ही पूरा देश को राज किया जा सकता था। ठीक तो बात। आज भी वो यथावत है, अगर आप देखेंगे तो, हाँ जी, अगर आप वो सिनेरियो देखा जाए। निसंदेह, उसी निसंदेह। तरीके से हमारी वारंगल से बस्तर रियासत की जो शुरुआत हुई, हम लोग सबसे पहले जो एक इतिहास कहता है, मतलब हमने उसका स्टोन इंस्क्रिप्शंस निकाले हैं, अच्छा, वो चोला डायनेस्टी तक जाता है। ओ माय तो गॉड। उसमें से ये बताया गया है कि उसमें से एक भाई ने आकर के चालुक्य डायनेस्टी चालू कराई गई। सबसे पहली डायनेस्टी हमारी चालुक्य वंशज कहा गया बस्तर रियासत। ठीक है जी, उसके बाद चालुक्य वंशज के बाद अगर आप थोड़ा-सा और आगे जाते हैं, चालुक्य वंशज के बाद उनका समापन हो गया। समापन इस तरीके से हुआ कि मुगल सल्तनत की बहुत ज़्यादा हाँ अ, जी, पैठ पड़ने लग गई थी इंडिया में, एंड लॉट ऑफ immigrants from the Mughal emperors came inside. Then करेक्ट, we shifted, the younger brother of the Chalukya Vanshaj came to Warangal. ओ वारंगल जो अभी आज के दिन हम उसको तेलंगाना राज्य कहते हैं, तेलंगाना में आ गया, करेक्ट, वो ऐतिहासिक नाम उसका वारंगल रहा। एंड करेक्ट, वारंगल वर एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 3 subcontinents. One was the coastal, राइट, second was the Reddy regiment, हाँ जी, and third was known as the Warangal Kingdom, which is basically adjoining Bastar state. मगर बस्तर स्टेट से लगा हुआ जो स्टेट आता है वो वारंगल स्टेट कहलाता है। ठीक है जी, और ये दोनों कोस्टल जो रूलर्स थे, जिसमें रेड्डीज हो गए और जो कोस्टल रूलर्स थे, हाँ जी, जिसमें कि मतलब आप कह लीजिए विजयनगरम वाज फॉर्म्ड आफ्टर वी लेफ्ट. ओ, So lot of the itihas says that after when we left Warangal, lot of these people started having their kingdoms because we left that kingdom. ओ, ओके, So then the kingdom of Kakatiya rulers was established, राइट, and we made the most beautiful thing in Warangal, which is still, you can say the government is preserving it right now. Telangana government is राइट, known as the water resource facilities. ओ वाह, We made the underground water tanks. Still, it is being restored, and still, I'm not talking about done by the government or anything. It was done like we came here in 1325. I'm ओके, talking about before that, we had these water resources हाँ जी, which used to be used for the water cultivation. That water was used for the cultivation of the crops राइट, inside the entire Warangal. And ओके, they say there were some hundreds and thousands made by the rulers so that they don't have any water problems. And it is still done a research राइट, by the intact, as well as lot of these water resource people are searching how ओके, these water resources used to work, because हाँ जी, still it has not dried out. ओ, That is amazing part of it. Then we made one temple known as the thousand temple, thousand pillar temple, that is known ओके, as. And we have a small replica. When you are in Bastar, you must have gone to one place known as Barsur. Barsur has a replica of it हाँ जी, that हाँ has small pillars. हाँ जी, हाँ जी, There was many, there's not like 1,000 pillars, but या, that must be around 10 to 20 pillars there. करेक्ट, करेक्ट, So that was a replica of that 1,000 temple was built here because the Warangal rulers came here. ओके, सो So that is like I'm trying to interrelate things so that it yeah, becomes a I get your clear point. picture. So original temple, where exactly it was in Warangal town? Warangal. Yes, it is basically Warangal. The Okay, Warangal was basically, for example, like Bastar हाँ is huge. It sure. is 13,400, I think 72 square kilometers. It's Yes, bigger than England. It's bigger than Kerala as a state. I know. That was At one Bastar, point in time, I believe Bastar was the biggest district of India. Asia. Asia, okay, Yeah. Asia. That's what I have heard from the All IPS, right, IAS all questions, right. ठीक है, that it was the biggest state. And yes, India mein to definitely it was. definitely, without India doubt. it was. And then what happened was, then Warangal mein that temple was situated in surrounding of the Warangal state. Oh,
they are very popularly known as that ki we had 7 monuments there. हाँ जी. That was known as the identification of Warangal. Okay. If you go to the state logo, like हाँ जी. every state has their different logo, Absolutely. like the Karnataka government has one. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. So like that, if you go to Telangana government, there is a pillar हाँ made जी. that is basically entrance of the Warangal state. Ooh. That entrance pillar, what we call it as the Singh Dwar, Correct, the correct. entry of the place. I have seen that insignia. I would and it made me curious कि ये कहाँ से आता है. So Yes. now I am getting that answer. So now the answer to that is कि when you see that, when हाँ we can, I would not share the photograph because I would have done it, हाँ हाँ. but because of this Dashera Karikram and all that, I'm like very busy with that. So that pillar has got 7 हाँ जी. points. If you see, it's like arches upside down. There are 7, and that replicates the kingdom's power in the state. Oh. And it was known to be that once upon a time, हाँ जी. we ruled the entire south of the entire India. Wow. That was the kingdom ruled by this dynasty. Oh, Namah Shivaya. Why? There's again a question. Why? Because totally. we had coastal also. All Remember right. that none of the rulers, Huh. all the rulers were fighting in elephants Huh. or horses. But you had a naval force. Yeah, and then there was path, basically paidal chal ke jo chalte. Oh, okay. That is known as Sainik. The infantry. So then there used to be one more segment came into was that there was no coastal power to any of the kingdoms. Right. There were very few who had coastal powers. That was Bastar, because earlier known as Warangal. So that was one of the thing. And then we developed one temple, which you known as, which you tell that the story about that Mata coming to Bastar. हाँ जी. So I'm very curious to know that story. Yeah. That story comes back to that if you come to Warangal, if you go to Warangal, there is one temple known as the Bhadrakali temple. That was the Kul Devi of the Kakatiyas. Now you will say, what is Kakatiya? There's again a question, what is Kakatiya? Kakatiya is 1008 names of Mahakali. Wow. One name is Kakatayini Devi. Wow. Kya baat. So that Devi's name, Maharaj, whoever the founder of the Warangal, the Chalukya last ruler from there, made this kingdom known as Warangal kingdom. And they surnamed themselves as Kakatiyas. Oh, okay. My surname comes, like my grandfather's name was Pravir Chandra Bhanj Dev Kakatiya. Oh. So Kakatiya was basically a goddess's name. We named the kingdom on the goddess's name. Now what I will tell you is that there's a very interesting thing that the viewers should know. There is a movie which has come on our family. Achha. Known as Rani Rudrama Devi. There's a movie, a South Indian movie has come up. Oh, really? Yes. Oh. And it's a very beautifully movie done, but there are a lot of things which a movie person changes it because for creative purposes, the creative part and all that. So the part you see that the lady, the queen, her name was Rani Rudrama Devi. Okay. When Alauddin Khilji came to this country, Alauddin Khilji attacked Warangal. Achha. In 907. 907, okay. Yeah, there was an era of 907 till 1100. That was the era. So that era, the Mughals were basically active into these regions. So the Warangal historians write it that he came and tried to capture Warangal. Okay. So there was a war between the Kakatiya royal family and Alauddin Khilji army. So they fought. Oh. When they fought, the major thing which came out of that fight was that Rani Rudrama Devi was killed. Okay. The child, the king was a child. Both of them were the children. They were not man. They did not take as a they were not a grown-up adult, and they were not the kings basically to take up the throne. That's why she was known as the Rani Rudrama Devi, because she lost her husband. But she was given the queen's status. She was ruling. Yeah. Ruling the entire state. So when the attack came, the elder brother known as Pratap Rudra was killed by the entire thing, and the kingdom was killed, and they destroyed the entire temples of Varanasi, including the 1,000 temples,
1,000 pillar temple, and as well as the entire temples. Right. Only one temple which was very much intact there was only one temple, that was the Kul Devi. All temples, there were like many temples. There were, Ram Mandir was there. There was Krishna Ji ka Mandir was there. There was a temple for Shivji. So they were invited me because of this corona. We could not go, but they were invited us for the government had invited us Okay. for the entire redoing of a Shivji temple. Okay. So they done a huge investment there just to rebuild up that entire temple, because basically they destroyed it to the ground, the entire thing. Just the shivling and their things were there old. So still people were doing that. Sure. So this comes up that now you'll ask me, Pratap Rudra was killed. Hanji. Rani Rudrama Devi was killed. Correct. Where is the younger one? There's one more brother. There were two brothers. Yes. So Annam Deva, the younger brother, right, Annam Deva, Hanji. he escaped from there. How he escaped was because he was playing with his subjects, known as the secret subjects of the rulers, which they were kept as the sevaks, who were like in the palace, and he was playing with their children outside the palace compound. Oh. In today's world, we call them as they call them as the Brahmins from Warangal. Oh. But in Bastar, we nickname them as Suar Brahmins. Oh. So these were the Brahmins. Their family में ये जाके खेलने लगे, बच्चे थे छोटे. हाँ जी, ये सुवार बोलते हैं. Suar means what? Secret. Yeah, Suar basically was a Brahmins which were the secret worshippers of the rulers there. Oh. They used to be the sevaks. Sevaks basically, and they were the pandits as well. Sure. So they used to take care of the temples also and the day-to-day routines of the royal family, like temples. Because earlier, that like people never had internet, they never had anything to do. Internet तो हमारे आते हुए आया जी. आजकल से आया. So the rulers had a lot of work at the households, and especially the priests, because they were known to be one of the most important sector in the kings. For example, Mughals has their own, the Maulanas used to guide them, like as well as we had priests to guide our kingdoms. Correct. And like we have Gurudev, so that time we also had gurus known as Raj Gurus. So they used to give us guidelines. So like that, the people, when they started going to play with them, the Mughal army was sent to find out where this younger child was. Oh. Just to slaughter him, because that was the kingdom rule, that you need to finish up any legal heir to the throne. Absolutely. You know that. You see the entire... Absolutely. Even today it is like that. I mean, yeah, it is in the indirect way. But many places, whether the Russian Revolution or the massacre of the royal family in Nepal or in Bangladesh, the Mujibur Rahman's family, the rules are quite still the same. Anywhere it has been the same. So that younger brother को जो पनाह दिया गया, now I come into Hindi, जो पनाह दिया गया, shelter, what I call it as, जो पनाह दिया गया, वो इस स्वार ब्राह्मण की महिला ने उनको वहाँ पे पनाह दिया गया. अच्छा. Now your question now will be answered. I'm just trying to give the background of it. Correct. Now what happened कि this boy was a young child playing there. Correct. And what I'm talking about is a Shila Lake written in Warangal, as well as we have it in Bastar, that is written in ancient Telugu. My God. It's huge stones, which we have read it, and now it's in English, Hindi, and we are trying to get a good museum out in the palace so that people can come and see it. Sure. So that entire thing was a massacre for the family, because एक तो Mughals ने empire ने attack कर लिया, the army came inside, they wanted to search for this kid. So these people gave them the panah, जो उनको shelter दिया गया कि आप खाना यहाँ रहेंगे. क्योंकि वो royalty थे, they used to wear something to know that they are royalties. Like सोने का कुछ पहने होंगे या कुछ ऐसी चीजें आभूषण होंगे जो उनको identify किया जाता है. वो आभूषणों को छुपा दिया गया. And when the Sena come and asked to the lady, who is he? Because that boy was allowed, he was a bit matured enough in that stage to play with the
like you can say, he was not being comfortable to play with the people. So they understood that this boy is something different from the others. Oh, So they pointed out. The lady came out and said, "ये तो मेरा बेटा है," अच्छा, just to protect हाँ, the boy. correct. That boy grew up. So I'll हाँ, not tell the entire history. There were a lot of things happened. So sure. the boy grew up. What he used to do, he used to go to the temple which was known as the Bhadrakali का, हमारी कुल देवी का, जो भद्रकाली, दंतेश्वरी माई ले लीजिए या ककटाइनी देवी ले, they are same. same. So वो कागज में लिखते थे, मेरे को मेरा राज चाहिए, अच्छा, कागज में वो भाई, वहां पे है. And what I'm talking is क्या written on the बात, inscription. क्या बात है, And ये he रोंगटे used to खड़े हो go, रहे हैं इस वक्त. yeah, they used to go and just put it on the head of the Mata and say that कि मेरे को ये चाहिए. That was Oh, written. हाँ जी, He used to write. Now after when he grew up a bit, हाँ जी, then there was a lady who used to play with him. हम्म, She used to come in the jungles to play, because that time it was more of a jungle and there were correct, small, correct. small places हाँ where जी, they used to have, you can say absolutely. wood made हाँ, हाँ, places where they used to, there was no something known as architectural things. yeah, So now what happened was, when he was playing, this lady who हाँ, came there, हाँ, what they say, and there is no inscription on that written, but they say that that was actually the Kaktaini Devi playing with the king, because she grew up and asked one question to the boy, हाँ, that what do you want? oh, Then that boy came to the mother who was giving the shelter, known as the हाँ, mother, जिन्होंने उनको पैदा पना पैदा तो नहीं पना किया दिया, मगर बड़ा बनाया. तो उन्होंने पनाह जो दिने, उन्होंने बोला कि जाके बेटा आप एक ही चीज मांगिएगा कि मेरे को मेरा राज वापस दिला दो. अरे, अच्छा, तो बोले कि राज तो दिला देंगे, मगर माता वो तो दिखती नहीं, आप लोग हमें दिखती है. अच्छा, तो बोले कि नहीं, आप ही जाएंगे, आप ही मांगेंगे. तो जब मांगने गए तो माता ने ये बोला कि ठीक है, ये तू मेरा वस्त्र ले, अच्छा, टेक माय वस्त्र. हाँ जी, मेरा कपड़ा, जो वस्त्र, जो ऊपर एक हाँ, हाँ, अंगोछा रखते थे पुराने, हाँ और जी, हाँ जी, बेसिकली अंगोछा इसलिए रखते थे, गर्मी लगती थी तो हाँ, पोंछ लेते थे. पहुंच नहीं, हाँ, तो इस तरीके का हो सकता है, क्योंकि अर्लियर एवरीवन वाज बेसिकली किसान ही थे लोग. किसान थे, दो वस्त्र में रहते थे सब लोग. यस. हाँ, एंड देन वो जब वस्त्र दिए, हाँ, नाउ दैट वस्त्र, शी सेड कि ये वस्त्र तू जहां जहां लेके जाएगा वो तेरा किंगडम होगा. ओके, नाउ माता सेड कि अब तेरे को किंगडम कौन सा चाहिए, यहाँ तो मुगल बैठे हुए हैं. हाँ, एक ही जगह बच जाता है, वो हाँ, होता है दंडकारण्य राज्य का हाँ, सेंटर, जहां हाँ, आज तक कभी कोई किंगडम ही नहीं बना. हाँ, मतलब ये बस्तर रियासत, दैट करेक्ट, इज दंड का, एंटायरली दंडकारण्य राज का सेंटर. हाँ, उन्होंने बोला कि वहाँ आदिवासी लोग रहते हैं. हाँ, माता ने बोला कि ठीक है. तो फिर महाराज उस समय तक अच्छे बड़े हो चुके थे. ही हाँ, सेड कि मेरे को कैसे पता चलेगा आप, और आप गायब हो गए तो बीच में. हाँ, बोले मेरी घुंघरू की आवाज सुनती रहेगी. यस. तो फिर उन्होंने 2 घोड़े मंगाए गए. उस समय घोड़ा ही एक कम्यूटिंग का वाहन होता. जगह होता था, हाँ, वाहन. तो वो घोड़ों को लाया गया. तो उसमें महाराज ने बोला कि मैं लड़ूंगा तो सही, मगर मेरे पास सेना भी नहीं है. हाँ, तो बोले वो चिंता मुझे करनी है, हाँ, तुम राज करना है बस. क्या बात. रख करके भगवान के सामने महाराज, हाँ, जो अन्नम देव थे, हाँ, उनको वहां पे अन्नम देवा नाम से बुलाया जाता है. अच्छा, हम यहाँ पे अन्नम देव बोलते हैं. द डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज, लैंग्वेज, हाँ जी, एंड बेसिकली इट्स अ रीजनल थिंग. बराबर है. उत्तर भारत में आरती होता है, दक्षिण में आरती हो जाता है. आरती होता है, बस. दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन द प्रोनाउंसिएशंस. हाँ, सो नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन दैट, जब उठा करके घोड़े पे बैठे और चलने लग गए, हाँ, तो इफ यू सी द बॉर्डर ऑफ दंतेवाड़ा एंड हाँ द जी, वारंगल, इट्स वेरी क्लोज. एब्सोल्युटली, अगर आप जंगलों में जाएंगे तो इट्स आप तो आए हैं, आप बहुत रहे हैं. पास है. मैं कई बार आंध्रा से ही, तब आंध्रा होता था, आंध्र, तेलंगाना नहीं बना जी, था. आई हैव एंटर्ड बस्तर थ्रू तेलंगाना आल्सो, आंध्रा तेलंगाना. आल्सो, आई मीन. तो आंध्रा से ही एंट्री हो जाता है और बहुत पास में है, ज्यादा दूर भी नहीं है. तो माता ने, मैं सॉरी फॉर इंटरप्टिंग. जी, मैं सुकमा में था, सुकमा के आगे कोंटा में था, कोंटा में. कोंटा. तो मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मुझे वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता था. तो मैं बाइक पे बैठ के वो आंध्रा बॉर्डर पार करके वहां वेजिटेरियन ढाबे में खाना खाने जाता था. इट इज 5 किलोमीटर फ्रॉम कोंटा. So So I basically, understand no other way what you. you have seen a Kashmir in Bastar, हाँ, 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 because it's so beautiful because of the absolutely. jungle and everything. हाँ जी, हाँ जी, So what I was trying to tell you that time was that the story goes back that when they started moving, as it is very close. हाँ So जी, there were 2 nadis. If you see when you हाँ come जी. towards Dantewada, एक संखनी है, एक डंखनी है. डंकनी, हाँ जी,
दो नदी का उसमें संगम होता है। संगम होता है, बहुत ब्यूटीफुल जगह है, मैं गया हूँ वहां। जी जी, जहाँ पे मेरे से आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा था कि माता के दर्शन हो गए थे, पैर छूते ही कुछ हाँ, लगा कि एहसास हुआ। मैंने अपना माथा नवाया और एकदम मुझे ऐसा शक्तिपात हो गया, मुझे लगा जी कि देवी के दर्शन हो गए मेरे को, मतलब जी देयर वाज नो डाउट इन माय माइंड। जी जी। और अगर आप वो देखते हैं माता का जो चरण पादुका है वहां पे, हाँ जी, वो बहुत ही छोटा है। छोटा इट्स सा, इतना सा। नॉट इट्स नॉट वेरी बिग। हाँ, और वो इतने से शिला के ऊपर है। इतने से शीला लेक के ऊपर ही है। हाँ हाँ और वो जो था, वो एक जगह था जहाँ पे माता जब आ रहे थे घोड़े से, हाँ जी हाँ जी। तो अब उनको बोला गया पता कैसे चलेगा पीछे आ रहे हैं। बोले घुंघरू तो की उन्होंने आवाज आ बोला रही। कि पैरों के, घोड़ों के पैरों पे घुंघरू बंधे हो। हाँ, और जब वो आएंगे तो फिर बाद में कभी कभी एंजाइटी ये रहती है कि अगर हम बोला जाता है कि आप ये मत करो तो आप करते हो। करते हो, So करेक्ट। he tried to move 2 or 3 times, but he tried to avoid himself because he knew that she is for me. या, So now there was a clause, there was a, I can say, एक शर्त रखी गई थी हाँ उसमें, जी हाँ जी, एक प्रॉमिस एक राजा को देनी पड़ती थी लाइफ टाइम के लिए फॉर हिज जनरेशंस आल्सो। करेक्ट। सो वो क्या था, अगर आप पीछे मुड़ के मुझे देख लोगे तो मैं वहां स्थापित हो जाऊंगी, ओ, मैं वहां स्थापित हो जाऊंगी। correct. और आप ही मेरे मेन पुजारी रहोगे, मैं ही आपसे फूल लूंगी, मैं ही आपसे पूजा पाठ लूंगी, आप मेरे मेन पुजारी कहलाओगे, राजा बाद में, पहले तो आप मेरे गॉड, माटी माय पुजारी गॉड, कहलाओगे। माय गॉड। और आप ही का ही भोग मैं लूंगी, क्या आपके हाथों से ही मैं भोग लूंगी। सो दैट वाज वन थिंग व्हिच वाज द यू कैन से द ट्रीटी, यू कैन से कि सही दैट बात। वाज, माँ ने एक बेटे को कहा कि तेरे को ये करना है। सर्विस एग्रीमेंट। And yeah, it was it was like a treaty only, it cannot be। एब्सोल्यूट ट्रीटी है Yeah. जी, एकदम। And earlier if that शब्द ही बड़े होते थे। शब्द ही बड़े होते थे, शब्द ही And सबसे बड़े होते। right now I also tell in the news is that words are the biggest weapon. You don't need व्हाट a आर द gun. बिगेस्ट। Words are the biggest weapon. या, श्योर, You don't need a gun. एब्सोल्युटली। Today's world, words are enough. हाँ हाँ So हाँ, like that earlier कहा गया था कि एक बार जबान दे दी तो तो हम दे दी, वापस नहीं ले सकते। बिल्कुल नहीं ले सकते। तो इस तरीके से हाँ भी हो गए महाराज से, और महाराज और माता रानी दोनों साथ साथ प्रस्थान किए। ठीक है। और जब वो शंखनी नदी के पास पहुंचे, अच्छा, जो वारंगल के तरफ से आती है, हाँ जी हाँ तो जी। वहां पे घुंघरू में रेत चली पानी, गई। रेत चली गई। पानी क्योंकि क्रॉस करना हाँ, था, वी हैव टू क्रॉस अ नहर। गीला, गीला रेत घुस गया। या घुस गया तो आवाज बंद हो गई। महाराज हाँ गॉट मोर एक्साइटेड, बोले हाँ यार ये आवाज क्यों नहीं आ रही है, सडनली बंद हो गई, हाँ इतने देर से तो आ रही थी। हाँ। तो महाराज ने पीछे टर्न किया, ओ, तो माता वहां पे आप देखेंगे संगम के जस्ट ऊपर ही मंदिर है। एब्सोल्युटली, ठीक तो ऊपर है। ठीक ऊपर है, हाँ और जहां उन्होंने टर्न किया वहीं उनकी पादुका है। हाँ, वहां से एकदम ऐसे स्टीप है नीचे को। जी। ये दृश्य और मेरी आंखों में आज भी है। फिर माता ने अपने आप को, एक स्टोन है वहां पे, हाँ जी द टेम्पल हैज अ स्टोन इनसाइड, बिकॉज आई गो हाँ इनसाइड हाँ जी गर्भगृह में। हाँ जी हाँ जी, गर्व। एक स्टोन के अंदर उन्होंने अपना स्थान विराजमान कर लिया अपने आप ओ, को, विथ हर रूप, ठीक है, एंड शी सेटल्ड हरसेल्फ देयर। करेक्ट। नाउ द इंटरेस्टिंग स्टोरी कम्स अप इज हाँ कि जी अब महाराज तो हाँ पुजारी हो गए, हाँ। अब वॉर कैसे लड़ेंगे। ओ, तो माता से आराधना की है दंतेश्वरी से, अच्छा। तो बोले कि ये वस्त्र तू जहां जहां लेके जाएगा तू विजयी होगी। तो हमने नागवंशी रूलर्स थे यहाँ पे, अच्छा, देन देवर भोंसले जो हैं, हाँ जो जी हाँ जी, मराठास कहते हैं, करेक्ट करेक्ट। उनके यहाँ पे सरदार थे यहाँ पे हाँ जी, कुछ जगहों पे, ठीक है। जैसे बारसूर है, ऐसे जगहों पे। हाँ जी, And there were one more royalties that were basically some Gond rulers were there. अच्छा अच्छा, So गॉड। these 3 wars were fought by the royal family of Bastar हाँ जी, with our goddesses' blessings, because we did not have an army to fight with. ओ, Because Maharaj came alone. हाँ, लड़ाई कहाँ से करोगे जब आपका सेना ही। योद्धा ही नहीं है पीछे। हाँ माथा का जो चमत्कारी जो युद्ध हुआ, और वो आज भी उसमें इंस्क्रिप्शंस हैं कि वहां पे सब जगह का वो सब मॉन्यूमेंट्स हैं, उसके शिलालेख हैं, यहाँ हाँ, तक कि गिन्नियां निकल रही हैं आज भी, स्टेट जमाने की माय ट्रीटीज हुई थी उसकी गिन्नियां निकल रही हैं, कहाँ पे सानंद साइन किए गए थे उसके इंस्क्रिप्शंस मिल रहे हैं।
अमेजिंग और अमेजिंग, उसमें बस्तर स्टेट का लोगो भी है। क्या बात तो ये माता आराध्य माई दंतेश्वरी का आशीर्वाद से है। फिर जो वस्त्र हम लेके चले, हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ जी अब हम क्योंकि वारंगल से थे तो हमको ये नहीं पता था कि वस्त्र को वस्त्र कैसे बोलते हैं, हाँ क्योंकि वी हैव द साउथ इंडियन टोन में अगर आप व बोलोगे तो वो ब निकलता है। हाँ, वस्त्र। तो वो बस्तर वस्त्र से हो गया, ये माता का ही देन था। जैसे वारंगल माँ के नाम से बनाया गया, इस बार माँ के दिया हुआ जो आशीर्वाद था, वस्त्र से बस्तर बनाया। बस्तर हो गया, ये तो मैं इट आज इज द प्रोनाउंसिएशन, इट इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द पीपल, बिकॉज क्योंकि बस्तर नामक एक ही गांव बनाया गया जहां पे महाराज का किला हुआ करता था, जो यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है, हाँ जिसको हम जी हाँ लोग जी फोर्ट बोलते हैं अंग्रेजी हाँ में, हाँ, और हिंदी में किला बोलते हैं। करेक्ट। और एक होता है जो रेसिडेंस होता है महाराज का, जिसको हम राजमहल बुलाते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में उसको पैलेस बुलाते हैं, हाँ हाँ हाँ, तो राइट। जगदलपुर पैलेस हो गया। जगदलपुर पैलेस हो गया, जहाँ पे अभी मैं बैठा हूँ, हाँ ये जी, और पैलेस। बस्तर तो अभी भी जिला मुख्यालय तो बस्तर ही पड़ता है शायद। जी, जिला मुख्यालय बस्तर पड़ता है। हाँ तो ये उसके पीछे बहुत बड़ी एक कहानी रही, हाँ जिसका जी, आपको मैंने विस्तार से बताया था कि क्या हो बहुत कि बहुत अच्छे से बताया आपने, एंड आई वाज वेरी वेरी क्यूरियस, एंड इट्स ऑलमोस्ट टर्निंग इनटू अ हिस्ट्री क्लास, बट यू नो वो इतना रिच है हिस्ट्री में, और किसी से पूछो बस्तर सोचने तो वो खाली सोचते हैं कि अरे माओवादी माओवादी, उसके अलावा पब्लिक को मालूम ही नहीं। सो आई थिंक यू नो आई वांटेड टू let people know as the very beautiful rich aspect of Bastar। आज हमने देखा कमल चंद्र भंजदेव जी से क्या था बस्तर का इतिहास, और नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि बस्तर का दशहरा सबसे मशहूर कैसे हो गया, क्या है रहस्य बस्तर के दशहरे के, और साथ ही जानेंगे कहाँ बिता है भगवान श्री राम का सबसे ज्यादा समय। तो देखते हैं कल के एपिसोड में, और हम इस इतने वैल्यूबल वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें,